स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है साइंस। मैंने आपको 6 एक्टिविटी तक करवा दिया था। अभी नेक्स्ट है 7 नंबर एक्टिविटी जो आपको करनी है। एक्टिविटी नंबर है 7 टू ऑब्जर्व द कंडक्शन ऑफ हीट इन डिफरेंट मटेरियल्स। Apparatus and material, beaker, water, gas stove, different materials like steel, spoon, plastic, scale, pencil and divider of a compass box. Procedure. Number 1. Heat water in a small pan or beaker. Number 2. Collect objects such as a steel, spoon, plastic, scale, pencil and a divider and dip one end of each of these articles in hot water such that their other ends remain outside water. Number 3. Wait for a few minutes and touch the other end of each article. Enter your observation in the following table. Observation table. Transfer of heat in different articles. ये आपको टेबल में बताया है जो आपको करना है, ठीक है। Other end of steel spoon divider becomes hot while that of plastic scale and pencil does not. Conclusion: metals are good conductors of heat, that is, heat can be conducted through metals easily. Materials such as plastic or wood are insulators or bad conductors of heat. Activity number 8 है to show the transfer of heat by convection in water. Apparatus and materials around bottom glass, water trip, wire gauge, Bunsen बर्नर, पोटेशियम परमैंगनेट, स्ट्रॉ। ये आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया है। देखो, सी द पिक्चर। प्रोसीजर नंबर 1. टेक अ राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क. नंबर 2. fill in 2/3 with water. Fill in 2/3 with water. Number 3. Place it on a tripod with wire gauge and arrange the Bunsen burner just below it. Number 4. Wait till the water in flask is still. Number 5. Place a crystal of potassium permanganate gently at the bottom of flask using a straw. Number 6. Heat the flask. Observe the heating process of water and write your observation. When violet color water heated, the color water near the flame gets hot water rises up. Number 2. Take a place of that hot water, the cold water from. The sides move down towards the source of heat. This water also gets hot, rises, and water from the sides move down. Due to violet color, currents of water going up and down can be clearly visible. This process continues till the whole water gets heated. After some time, whole water turns violet color. Conclusion: heat is transferred in water by convection. Activity 9 है to show that air above the flame gets heated by convection. Apparatus and materials, candle stand. ये देखो, आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है डायग्राम। Procedure: put a candle on a stand, light the candle. Number 3. Keep your one hand above the flame, carefully at a safe distance from the flame so that it does not get burnt, and other hand on the side of the flame. Do your hand feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? Observation है, the hand above the flame feels hotter than the hand on the side. Conclusion है, the air above the flame gets heated by convection
while convection does not occur on the sides. Activity number 10 है to observe that dark color black objects absorb more heat more quickly than light color objects. Apparatus and materials 2 tin cans black and white color water. Procedure: take two identical tin cans. Now, number 2, paint the outer surface of one can black and the other can white. Number 3, when the paints become dry, pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. 4 number, measure the temperature of water in both the cans. Number 5 है, do you find any difference in temperatures? Number 6, in which can is the water warmer? Observation: the temperature of water in the black can is more than that of water in the white can. Conclusion: the black color objects absorb more heat than the white object. Activity number 11 है to observe that dark color black objects lose heat more quickly than light color white objects. Apparatus and materials: black and white color in cans hot water. Procedure: take black and white colored in cans used in above activity 10. Number 2, fill both the cans equally with water at 60 Celsius temperature. Leave the cans in a room or in a shade. Number 4 and note the temperature of water. Note the temperature of water in both the cans after 10 minus 15 minutes. Does the temperature of water in both the can fall by the same amount? Observation: the temperature of water in the black can is lower than that of water in the white can. No. Conclude: the dark color object loses heat more rapidly than light color object. अभी MCQs हैं वो करवा देती हूँ जो आपको करने हैं. नंबर 1, which temperature range is not measured by clinical thermometer from इसके MCQs हैं ये. ए ऑप्शन है 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस, बी फ्रॉम 94 टू 108, नंबर सी फ्रॉम 95 टू 105, नंबर डी 45 सेल्सियस टू 60 सेल्सियस. तो आंसर आएगा 1 डी 45 सेल्सियस टू 60 सेल्सियस. नंबर 2 है फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, द पेशेंट himself puts the clinical thermometer below his tongue in mouth for about 2 minutes. He then takes out the thermometer from his mouth for some time. When the doctor comes, he shows the thermometer at that time. Which temperature is known by thermometer? A, temperature of atmosphere, temperature of patient's body. C, less than the temperature of patient's body. D, more than the temperature of patient's body. तो इसका आंसर आएगा बी, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट्स बॉडी. नंबर 3 है एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन वेसल वाटर. At 10 Celsius temperature in vessel B water, at 50 Celsius temperature and in vessel C water and 30 Celsius temperature is filled. Now dip your right hand in vessel A and dip your left hand in vessel B for 5 minutes. After 5 minutes put both the hands. देखो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया है, आपको देखना है इसको ध्यान से. सिमिलरली इन वेसल सी विच योर हैंड्स फिल वाटर कूल. कौन सा वाटर फिल करेगा कि ये कूल है? तो देखो इसका MCQs के ऑप्शन है ए राइट हैंड, बी लेफ्ट हैंड, सी बोथ हैंड्स एंड डी कैन नॉट बी सेड डेफिनेटली. तो इसका आंसर आएगा आपका सी का बी आंसर आएगा लेफ्ट हैंड. नंबर 4 है विच लिक्विड गेट्स हीटेड बाय कंडक्शन. ए वाटर, बी कैस्टर ऑयल, सी मिल्क एंड डी मर्क्यूरी. तो आंसर आएगा डी मर्क्यूरी. क्या आंसर आएगा? डी मर्क्यूरी. नंबर 5 है 98.6. तो इसके ऑप्शन है ए 35, बी 37, सी 42, डी 60.
तो इसका आंसर आएगा आपका बी 37 सेल्सियस। नंबर कौन सा है नेक्स्ट? नंबर 6 है द टेम्परेचर्स ऑफ द 2 glasses ऑफ वाटर आर 30 सेल्सियस and 0 Celsius. The difference in temperature of the 2 glasses of water is 30 Celsius. What is difference in temperature on the Kelvin scale? 30 K A 30 K, number B 24 3 K and 86 K and 33 K. तो इसका आंसर आएगा आपका 6 का आंसर आएगा A 30 K। अभी नेक्स्ट है नंबर 7। प्रशांत wants his noodles to cool down very soon. He must put it on a plate made of A wood, B ceramic, C plastic या D metal। तो आंसर आएगा इसका D metal। ये आपके क्या थे? MCQs थे जो मैंने आपको करवा दिए। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वो चैप्टर करवाऊंगी। 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है और इसे लर्न करना है। और वीडियो हर रोज़ करवाते हैं जो आपको देखने हैं। खाली वीडियो ऐसा नहीं कि आपको लिखना ही है, लिख के लर्न भी करना है। थैंक यू।